So, hey folks, welcome to Keep It Simple. So, in today's video, we will learn some anatomical terms in a very simple way. So, basically, anatomical terms होती क्या है और इनमें कौन कौन सी terms आती हैं, कौन कौन सी positions आती है और हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम इस चीज़ की बात करते हैं. So, basically, in anatomical terms, we will discuss about body positions, movement and planes. तो यहीं से हम the lecture start करते हैं. So first of all, we will discuss anatomical planes. And here are the anatomical planes. There are three anatomical planes: transverse, frontal, and sagittal. So let's see what they are. So let's talk about transverse plane. So what is transverse plane? Transverse plane is like slicing the body horizontally into upper and lower sections. तो ट्रांसफर प्लेन में होता ये है कि हम बॉडी को डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली इनटू अपर एंड लोअर सेक्शंस. बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करने से हम बाकी पोजीशंस को आसानी से पढ़ सकते हैं. ट्रांसवर्स प्लेन को हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि बॉडी का जो प्लेन होता है वो पैरेलल होता है ग्राउंड से. बॉडी टॉप और बॉटम हाफ में डिवाइड होती है. एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स प्लेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट coronal और frontal plane. Coronal plane is also named as frontal plane. Frontal और coronal पे में हम बॉडी को ऐसे डिवाइड करते हैं कि बॉडी बैक और फ्रंट दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है. It's like slicing the body into anterior and posterior parts. Anterior means front and posterior means back. जब हम organs की positions की बात करते हैं और वो back और front की position की बात करें तो हम उसमें anterior और posterior terms use करते हैं. Well, this is all about frontal plane. अब हम last plane की बात करते हैं which is sagittal plane. So, sagittal plane is like slicing the body from front to back. तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें भी बॉडी फ्रंट टू बैक डिवाइड होगी तो ऐसा नहीं है. इस बात का मतलब है कि जब हम प्लेन से बॉडी को डिवाइड करेंगे तो वो जो प्लेन होगा वो जो है फ्रंट से लेकर बैक तक किया जाएगा, क्योंकि वो जो प्लेन होगा बॉडी को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड कर जाएगा. sagittal plane is very useful plane और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं हम उनको sagittal plane के डिवीजन मतलब उसके प्लेन की वजह से बता सकते हैं कि वो राइट पर है लेफ्ट पे है. So this was all about three planes of the body. तो in the last part of this video अब हम दूसरी पोजीशंस की बात करेंगे और इन पोजीशंस को समझना बहुत इजी होगा क्योंकि हमने प्लेन्स की बात कर ली है. तो ये जो जितने भी पोजीशंस होंगे ये प्लेन्स से ही रिलेटेड होंगे. So let's start our next part. अब जो हम टर्म्स की बात करेंगे वो प्लेन्स नहीं बल्कि पोजीशंस होंगी और इनमें से कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जिसमें हम प्लेन्स को देखते हुए डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो. तो इन पोजीशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे medial, lateral, superior, inferior, posterior, anterior, distal, proximal. So first of all, we will discuss medial and lateral. So let's see what is medial and lateral. As you can see there, इस पिक्चर में बॉडी को sagittal plane में डिवाइड किया गया है और sagittal plane के जरिए हम medial और lateral plane पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं medial plane. Medial plane जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ मिड लाइन की बात खुद है या इसमें कुछ मिडिल की बात की जा रही है. ऐसा ना medial plane और medial position हम उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स जो है इनसाइड द बॉडी पार्ट वो मिड लाइन में हो या मिड लाइन से करीब हो. It means towards the midline. So basically medial position. When it comes to anatomy, the term medial refers to a position or a structure being closer to the midline of the body. It helps us to describe the relative position of different parts. For example, we might say that nose is medial to the ears, meaning it is closer to the midline of the face compared to the ears. Similarly, the big toe is medial to our little toe. So this was all about medial position. Now let's talk about lateral position. Medial position समझ लिया, अब lateral position को समझने में और भी आसानी होगी. So in simple words, lateral position को हम ऐसे define कर सकते हैं: away from the midline, जैसे कि medial position towards the midline था. So lateral position is opposite to the medial position. It is away from the midline. So when we talk about lateral in anatomy, we are referring to a position or a structure being further away from the midline of the body. It helps us to describe the relative positions of different body parts. For example, we might say that the ears are lateral to the nose, meaning they are positioned further away from the middle line of the face compared to the nose. Similarly, the little toe is lateral to the big toe. So this was all about the lateral and medial positions. Now we will talk about other positions. Now let's see what is superior and what is inferior.
So basically, when we talk about superior, it means towards our head or away from the ground, or you can also say away from the foot. But when we talk about inferior, it means away from the head or towards the ground, or you can also say it downward. I guess यहाँ तक कीवर्ड में समझ आई गया होगा that what is superior and inferior, but we will discuss more about it. So let's see. In anatomy, superior refers to a position or a structure being located above or higher than another structure. It helps us to describe the relative positions of different body parts. For example, we might say that the head is superior to the neck, meaning it is positioned above the neck. Similarly, the chest is superior to the abdomen. Now inferior. In anatomy, the term inferior refers to a position or a structure being located below or lower than another structure. It helps us to describe relative positions of other body parts. For example, we might say that the feet are inferior to the knees, meaning they are positioned below the knees. Similarly, the pelvis is inferior to the chest. So we have done superior and inferior here. Now let's talk about distal and proximal. Now we will talk about distal and proximal. Proximal position में मस्त position कहते हैं बॉडी का वो part जो कि joint से और attachment of limbs से close or near हो is proximal. जहाँ से दो bones join हो रही होती है और muscles join होता है उस point से अगर कोई body part near हो या करीब हो or you can say close हो तो उस point को हम proximal कहेंगे. Nearest point of attachment to limb or structure. This is called proximal. Now let's talk about distal. Distal बिल्कुल opposite होता है proximal के. Body का part joint से या attachment of limb से दूर हो far हो is called distal. Virus away from attachment of origin is called distal. Let's see more explanation of distal and proximal. So when we talk about distal in anatomy, we are referring to a position or a structure being further away from the point of attachment or origin. It helps us to describe the relative positions of different body parts. For example, we might say that the fingers are distal to the wrist, meaning they are positioned further away from the point of attachment to the hand. Similarly, the toes are distal to the ankles. Now we will see proximal. So guys, when we talk about proximal in anatomy, we are referring to a position and structure being closer to the point of attachment or origin. It helps us to describe the relative positions of different body parts. For example, we might say that the elbow is proximal to the wrist, meaning it is positioned closer to your point of attachment to the arm. Similarly, the thigh is proximal to the lower leg. So this was all about proximal and distal. Now we will discuss anterior and posterior. जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है एंटीरियर हम कहते हैं फ्रंट को और पोस्टीरियर हम कहते हैं बैक को. So front part is anterior and back part is posterior. So what is anterior? Anterior is an anatomical term that means the front or forward part of the body. To cover their front or forward part of their body का. Now let's see what is posterior. Posterior is an anatomical term that refers to the back or rear part of the body. For example, the buttocks are located on the posterior side of the body. So guys, these are all the terms that we have to discuss today. So here we have done all our terms. So in the next video, we will discuss some movements of the body.